class class 10th statics 14.3 chapter number 14 question number 6 100 surnames were randomly picked up picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames was obtained as following. Given table: number of letters 1 to 4, number of surnames is 6 numbers, numbers 4 to 7 letters is 30, and 7 to 10 numbers is 40, and 10 to 13 numbers is 16, and 13 to 16 numbers is 4, and 16 to 19 numbers is 4. तो हम क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं दोबारा. 100 सरनेम्स यानी कि 100 पर्सन्स का सरनेम्स का हिसाब बनाया गया है, जिसमें लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी में उनके नंबर ऑफ़ लेटर्स के हिसाब से नंबर ऑफ़ पर्सन को सिलेक्शन और सेलेक्ट किया गया है. 1 से 4 लेटर्स जो है उसमें 6 पर्सन हैं, और 4 से 7 वाले में लेटर्स में 30 पर्सन हैं, और 7 से 10 नंबर ऑफ़ लेटर्स में 40 पर्सन्स हैं, और 10 से 10 से 13 में 16 पर्सन है, एंड 13 टू 16 में 4 पर्सन है, एंड 16 टू 19 में 4 पर्सन है. तो हमारे को यहाँ पर सरनेम्स आज गिवन है, और so determine the median number of letters in the surnames and find the mean number of letters in the surnames and also find model size of the surnames. So हमारे को यहाँ पर उसका मीन, मोड और मीडियन फाइंड करना है. सो हमने एक टेबल क्रिएट किया जिसमें हमने नंबर ऑफ़ लेटर्स जो गिवन है उसको 1 to 4 को नंबर ऑफ़ लेटर्स जिसमें है वो 6 पर्सन है, एंड 4 to 7 में 30 पर्सन है, 7 to 10 जो लेटर्स हैं उसमें नंबर ऑफ़ पर्सन 40 है, एंड 10 to 13 में 16, एंड 13 to 16 में 4 नंबर ऑफ़ पर्सन है, और 16 to 19 में 4 पर्सन है. देयर आर गिवन सम इज़ गिवन also here. Summation fi is equal to 100, and so here ये मीन के लिए एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे हम. तो 4 and 1 5, 5 का हाफ 2.5, 7 4 11, 11 का हाफ हो जाएगा 5.5, एंड 10 and 7 17, 17 का आधा 8.5, 13 10 23, 23 का हाफ हो जाएगा 11.5, and here sir 16 and 13, 28 and 29, so 14.5, 14.5, and 19 120, 25 and 35, 17.5. This is a mid values. This is a mid value. So we have here 3 and 3 6 numbers. So we let A assume number is our 11.5 is our A, as and here xi minus A. So we calculate here
सम डी आई निकालने के लिए हम करेंगे डी आई इजकल टू एक्स आई माइनस ए. So here our di is first 2.5 minus 11.5, which is 2.5 minus 11.5. We get here di here 11.5 minus 2.5 is 9 minus 9 5.5 again here 5.5 minus 11.5 5 cancel 11 and 5 6, so minus 6. This is number is 8.5. This is comes here again 5.5 minus 8.5, so minus 3. There 0, and here is also 14.5 minus 11 plus positive 3 and 17 minus 11 6. So FIDI is 9 6 are 54 minus 54 and 36 are 118 180 and 43 are 120, and here 11 here 16 0 0 4 3 are 12 and 6 4 are 24. So here 4 adding is that माइनस में हम देखेंगे here 4 8 5 13 15 16 8 5 13 14 15 5 1 carry 2 3 354 minus 4 8 5 13 14 15 5 1 carry 3, and here 4 2 6 and 2 1 3. So we get 14 में 6 गया 8 and 14 में से 6 गया 8 हो गया आपका, 4 में 3 गया 1 minus 318. So here we find here by the mean calculate assumed method. Mean assumed method by here mean is equal to a plus summation fi di oblique में summation fi. So here summation fi di is equal to minus 318, and a is our 11.5 plus fi di is minus 318, fi is 100. So we look here is equal to 11.5 minus 3.18. So answer is that 11.5 and 3.18. So minus 10 में 8 गया 2 and 10 में 8 गया 2 and 4 में से 1 गया 3.11 में 3 गया 7 4 here 8 10 में 8 गया 2 and
4 में 1 गया 3, 11 में 3 गया 8, 8.32, 8.32 here 8.32. So mean is 8.32. This is our answers. Mean calculation. अब हम मीडियन इसका मोड कैलकुलेट कर लेते हैं. सो हेयर मोड कैलकुलेशन के लिए here mode here f1 frequency of model class and model class. Here f1 frequency model class, maximum number is in fi frequency. Here maximum number is 40. So yeah, this is our f1 is 40. So 40 number f1 40 corresponding class size 7 to 10 and lower limits L, which is 7. Lower limits L is 7. Then f naught frequency of model class is equal to, see here L our 7 and f naught is 30. F naught is 30. So f naught is 30 numbers and f2 frequency f naught is 30 and frequency of model class is f2 is here f2 and h is class size 10 to 7 is equal to 3 and f2 is that here f2 is 16 and 10 में 7 get 3, f2 is 16. So here we calculate the f1 is 40, lower limit L is 7, f naught is equal to 30 and f2 is equal to 16 and h is equal to 3. So mode calculate L plus frequency f1 minus f naught and 2f1 minus f naught f2 multiply with
H. So L is our 7. F1 is 40. F naught is 30. 2 multiply 40 minus F naught is 30 and F2 is 16 and H is our 3. So 40 minus 10, 80 minus 6314 plus 7 into में 3. So here 7 plus 10 में 6 या 4 and 7 में 4 के 3 into में 3 into 10 30 divided 34 plus 7. So here 34 divided by 3 30.0 34 8 is the 272. फिर अगेन 10 में 2 के 8 and 9 में 7 के 2 again 0.0 gives so 8, so 272. So our answer is 7 plus 0.88, which is equal to mod is that 7.88. एंड अब कैलकुलेशन जो है मीडियन फॉर्मूला इज हेयर मीडियन frequency of model class F1, here number n and n by 2 with observation n is our 100 and here 100/2 is equal to 50th observation and 50th observation. Here frequency tables, we find the cumulative frequency here. Look here, cumulative frequency is that 6 plus 30 36 plus 40 6 4 3 7 76 36 plus 40 6 and 4 3 7 and 76 plus 16 6 6 12 2 8 9 92 and 92 plus 4 is 96 and 96 plus 4 is 100. So cumulative frequency is 100. Here n is 100. So CF is 36 and F is that 40 and lower term is 7. So we write here these values here. Here F is equal to our F number is 40 and lower limit F is 40. Here
frequency of model class, median F40, and here lower limits is 7, lower limit is 7, and CF cumulative frequency our cumulative frequency is that cumulative frequency is 36, cumulative frequency, so median is that L plus n oblique 2 CF oblique F into my H. So here L is our 7 plus n by 2 is 50, CF is 36, F is equal to our 40, H is equal to our H here, H is equal to 3, 10 minus 7 is 3, so 10 minus 6 here, 7 plus 10 minus 6 is 4, and 4 में 3 है 1 into में 3 upon में 40, so 14 3 is 42, here again divide, here 40 divide 42, 41 is 40, 2.0 again 0 and get 0, 14 5 is 200. So here is equal to 7 plus 1.05. So our 8.05 here we calculate mean. Firstly mean is our mean calculation is that mean is 8.32, mode calculate 7.88 and median 8.05, hence the median number of letters surname is equal to 8.05. We calculate it, and here weight in kg 40, question number 7. The distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the median of weight of the students. Here weight in kg 40
40 to 45 is 2, and 45 to 50 is 3, and 55 to 55 is 8, and 55 to 60 is 6, 65 to 65 is 6, and 65 to 70 is 3, 70 to 75 is 2. Here the weight in kg 1.67, median is 56.67. This is median, hence 56.67. So we write is hence the median weight of the students (56.67 kg). So we easily understand this question. We here 40 to 45 is 2, here question number 7, we 100 surnames and calculation हमने इसमें FI मीन मोड और मीडियन तीनों फाइंड किया हमने क्वेश्चन नंबर 6 में, एंड हेयर मीन इज 8.32 एंड हेयर मोड हमने बहुत आसानी से कैलकुलेशन किया, इसका मोड जो था हमारा 7.88 एंड मीडियन इज़ दैट मीडियन इज़ 8.5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया जिसमें हमें मीडियन फाइंड करना था। सो इसका वेट इन केजी में गिवन है, टेबल हमने क्रिएट की 40 to 45 2 गिवन है, 45 to 53, 50 to 55 8, 55 to 66, 60 to 65 6, 65 70 3 एंड 70 to 75 2। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली 2 5 13 19, हेयर 2 + 3 5 5 3, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 6 25, 25 + 3 28 and 28 + 2 30. So n is 30 and 15th of the CF cumulative frequency is given 13, F is 6 and lowest term is 55. So CF cumulative frequency is 13, frequency is 6 and lowest limit 55, हाई और क्लास साइज इज 5. सो मीडियन हमने कैलकुलेट किया n/2 माइनस CF ऑब्लिक में F इंटू मैच एंड LOS हमने सारी वैल्यू रखी 55 15 माइनस 13 2 2/6 2 1 1 1 1 एंड 2 1 2 2 3 6 5/3, फिर 5 को डिवाइड किया हमने तो 1.67. So median is 56.67. So hence the median of the student is 56.67 kg. This is our final answer.